guys, welcome back to my channel Beauty and Beyond. I think from my attire you must have already guessed what today's video is going to be all about. Being a Bengali myself, I had to do this Durga Puja look and I'm really happy with how this has turned out. The eyes, the lips go really well with the sari. And yeah, if you're interested to know how I achieved this look, please keep on watching. So as you know कि अभी ऑटम चल रहा है, although हमें फील नहीं हो रहा है, it's too hot right here. लेकिन फिर भी हमें अपना फेस मॉइस्चराइज रखना चाहिए because the weather is dry and it will show on your skin. So I'm using this moisturizer from Yukinu. It's a Korean brand and I love this moisturizer. अब फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद you need to use a primer. So I'm going to be using this Rimmel Stay Matte Primer. It's a very good primer for oily skin. And primers को आपको वहीं लगाना है जहाँ पे आपके pores हो. Like I have pores around my nose, so I'm going to be applying the primer only there. अब अगर आपका dark circles है, जैसे कि मेरे dark circles है, so to cancel out those dark circles आपको एक orange concealer use करना है. So I'm using this palette and taking this orange concealer. जहाँ जहाँ आपके dark circles है या फिर spots है, apply the concealer there. अब फाउंडेशन के लिए I'll be using Lakme और अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा लाल लग रहा है, but don't worry. Now you can see कि सारा redness चला गया है. Now I'm going to be using Sugar Concealer. So मैं जनरली डबल कंटोरिंग करती हूँ, मतलब पहले क्रीम कंटोरिंग करती हूँ, उसके बाद पाउडर कंटोरिंग. सो जो मुझे पहले क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने हैं आई अप्लाई ऑल ऑफ दोस. उसके बाद आई सेट माई फेस विद द सेटिंग पाउडर. सो क्रीम कंटोर के लिए आई विल बी यूजिंग दिस शेड. अब सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हो गए हैं. द कॉन्टूर इज ऑन प्लेस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. नाउ आई विल बी सेटिंग माय फेस विद अ सेटिंग पाउडर. सो ये है लैक्मे का रोज पाउडर. Now time for the powder contour. So I'm going to be using this My Glam Pose HD Bronzer Duo. It has two shades. I like to mix both the shades और मैं दोनों shades एक साथ use करती हूँ. First I use this one. Now taking the sugar blush in the shade Coral Climax. It's a beautiful orange shade. So time for the eyebrows. Eyebrows के लिए आप कोई भी eyebrow pencil use कर सकते हैं, but I mainly prefer using a black eyeshadow. So मैं ये Swiss Beauty का palette use कर रही हूँ. इसमें एक black है which is very beautiful. So I'm going to be using that black. So the eyebrows are on fleek. Now I'm going to be doing the eye makeup. और उसके लिए I'm going to be using the Pretty Allset palette. It has beautiful colors. Let me show you. If you want to see a review on this, I have it on my channel. Please go and watch that. I'll leave the link in the description box. अब मैं
लाइनर को थोड़ा स्मोक आउट करूँगी. सो आई बी यूजिंग दिस काजल फ्रॉम अमारा ऑर्गेनिक्स एंड मैं इसे एज अ लाइनर यूज़ करूँगी. Eyes are done and I think they are looking pretty good. मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से स्मोक आउट किया है और एक विंग्ड कर दिया है उसी पेंसिल से. So that is it. Now I'm going for the highlighter. I'm using this Master Chrome highlighter. Final touch, which is the lipstick. I'm going to be using this My Glam lipstick in the shade DM Slide. It's a beautiful maroon shade and I'm going to be applying the eyelashes and I'll be... So I'm done with the whole look. The last thing is a perfume. I'm using this perfume from Perfumers Club. It's named the Bombshell. With that, we finished today's look. I hope you enjoyed it. I really enjoyed creating it and I love how this has turned out. So if you enjoyed it too, please subscribe and like this video. Happy Durga Puja to all of you all. Be happy, be safe. I'll see you next week.